नमस्कार दोस्तों, ई टेक्नो लर्निंग चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। द क्वेश्चन इज सॉल्व इन ब्रैकेट tan y प्लस x इंटू डी एक्स प्लस इन ब्रैकेट x sec स्क्वेयर y माइनस 3y इंटू डी वाई इक्वल टू 0। नाउ इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम इसे कंपेयर करेंगे with respect to equation m dx plus n dy equal to 0. So on comparing we get value of m as tan y plus x. Now इस इक्वेशन को हम डेरिवेटिव लेंगे partially with respect to y. So therefore we write del m upon del y equal to derivative of tan y is sec square y प्लस डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y विल बी 0 क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू y, सो देयरफॉर x विल बी कांस्टेंट। सो लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली वैल्यू ऑफ n विल बी x sec स्क्वेयर y माइनस 3y। नाउ इसका हम डेरिवेटिव लेंगे पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x। सो वी राइट del n upon del x equal to, now in first term sec square y will be constant because we are taking derivative with respect to x, and derivative of x with respect to x is what? 1. So we write sec square y in bracket 1 minus derivative of this 3y with respect to x will be 0 क्योंकि that will be constant when we are taking derivative with respect to x. So therefore let this be equation number 2. Now on comparing equation 1 and 2 we can write del m upon del y equal to del n upon del x, and therefore we can say that the given differential equation is exact, and hence the general solution is given by integration of m into dx plus integration of terms of n not containing x into dy equal to c. Now इस इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो वी राइट इंटीग्रेशन ऑफ tan y प्लस x into dx. नाउ फ्रॉम इक्वेशन ऑफ n हम सिर्फ वही टर्म कंसिडर करेंगे जिसमें x नहीं है. सो फर्स्ट टर्म कंटेन्स x, सो वी विल निग्लेक्ट इट. इन सेकंड टर्म वी डोंट हैव एनी x, सो इसे हम कंसिडर करेंगे. सो वी राइट इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 3y इंटू डी वाई इक्वल टू c. लेट अस ओपन द ब्रैकेट. नाउ इन फर्स्ट टर्म tan y will be constant because we are integrating with respect to x. So we write integration of 1 into dx plus integration of x into dx minus 3 into integration of y into dy equal to c. Now इसे simplify करेंगे. So we write integration of 1 into dx is x, so x tan y plus integration of x into dx is x square upon 2 minus 3 into integration of y into dy is y square upon 2 equal to c, and this is the final solution for the given question. Next question is solve y in bracket 1 plus 1 upon x plus cos y into dx plus x plus log x minus x sin y into dy equal to 0. नाउ इस इक्वेशन को भी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम उसे कंपेयर करेंगे विथ इक्वेशन m into dx plus n into dy equal to 0. So on comparison we get value of m as y in bracket 1 plus 1 upon x plus cos y. Now इस इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y. सो वी राइट del m upon del y equal to, now
ये फर्स्ट टर्म में 1 plus 1 upon x will be constant because we are differentiating with respect to y, and differentiation of y with respect to y will be 1. So we write 1 plus 1 upon x into 1. Now differentiation of cos will be minus sin y. So therefore del m upon del y equal to 1 plus 1 upon x minus sin y. Let this be equation 1. इसके बाद value of n will be x plus log x minus x sin y. Now इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे with respect to x partially. So we write del n upon del x equal to, now differentiation of x is 1, then differentiation of log x is 1 by x minus यहाँ पे sin y will be constant because we are differentiating with respect to x, and differentiation of x is 1. So we write 1 into sin y. Therefore del n upon del x is equal to 1 plus 1 upon x minus sin y. Let this be equation number 2. Now equation 1 और 2 दोनों को कंपेयर करके we can write del m upon del y equal to del n upon del x, and therefore we can say that the given equation is exact. Therefore general solution is given by integration of m into dx plus integration of terms in n free from x into dy equal to c. Now यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो वी राइट इंटीग्रेशन ऑफ y in bracket 1 plus 1 upon x plus cos y into dx plus, now यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन ऑफ n हमें सिर्फ वही टर्म्स कंसिडर करने हैं जिसमें x नहीं है. तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल द 3 टर्म्स इन्वॉल्व x. सो देयरफॉर इसमें से एक भी टर्म इस इक्वेशन में नहीं जाएगा. सो विल डायरेक्टली राइट इंटीग्रेशन ऑफ 0 into dy equal to c. Now let us open up the bracket. We write यहाँ पे y will be constant because we are integrating with respect to x. So y into integration of 1 plus 1 by x into dx plus, again cos y here will be constant. For the same reason we are integrating with respect to x. So we write cos y into integration of 1 into dx equal to c. So y in bracket integration of 1 into dx is x, integration of 1 by x into dx is log x plus cos y into integration of 1 into dx is x. So टर्म्स को रीअरेंज करेंगे. वी राइट x प्लस log x into y plus x cos y equal to c, and दिस इज अवर फाइनल आंसर. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो.